आप सभी प्रिय दर्शकों को नमस्कार। आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ श्री दुर्गा सप्तशती को लेकर के। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को श्री दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत पंचम अध्याय का क्रमशः संपूर्ण अध्ययन कराया था। उसी क्रम में आगे आज हम षष्ठम अध्याय का अध्ययन कराने जा रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक एकाग्रता के साथ प्रत्येक श्लोकों का अक्षरशः श्रवण करें। बहुत ही सरलता से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सीख जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री दुर्गायै नमः। षष्ठोऽध्यायः ध्यानम्। ओम नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत् तंसोरुरत्नावली। नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत् तंसोरुरत्नावली। भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भाषितां। भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भाषितां। मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां। मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां। सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। पुनः एक बार और संपूर्ण श्लोकों का श्रवण करें। ओम नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत् तंसोरुरत्नावली। भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भाषितां। मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां। सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्याः सदूतोमर्षपूरितः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। इत्याकर्ण्यवचो देव्याः सदूतोमर्षपूरितः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्य माकर्ण्यासुरराट्ततः। सक्रोधः प्राह दैत्यानां मधिपं धूम्रलोचनं। तस्य दूतस्य तद्वाक्य माकर्ण्यासुरराट्ततः। सक्रोधः प्राह दैत्यानां मधिपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां। हे धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां। तत्परित्राणदः कश्चिद्यदिवोत्तिष्ठते परः। स हन्तव्यो मरो वापि
स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा यक्षो गन्धर्व एव वा तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणा मसुराणां द्रुतं ययौ तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणा मसुराणां द्रुतं ययौ सदृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः सदृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणभिः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणभिः देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहं दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तः शोभ्यधावत्ता मसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म साचकाराम्बिका ततः इत्युक्तः शोभ्यधावत्ता मसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म साचकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्य मसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः अथ क्रुद्धं महासैन्य मसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ततो धुतसटः कोपात् कृत्वा नादं शुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः ततो धुतसटः कोपात् कृत्वा नादं शुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्
दैत्यानास्तेन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान महासुरान् कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्तेन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान महासुरान् केषाञ्चित्पाटयामास नखैकोष्ठानि केशरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् केषाञ्चित्पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठा दन्नेषां धुतकेशरः विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठा दन्नेषां धुतकेशरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमशुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च छयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः श्रुत्वा तमशुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च छयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भप्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भप्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशे स्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैः रसुरैर्विनिहन्यताम् तदा शेषायुधैः सर्वैः रसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकां तस्यां हतायां दुष्टायां
सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्य तां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनमन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भ निशुम्भ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें तथा साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी समस्त प्रकार की वीडियो का आप सभी बंधुजनों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसी के साथ सभी बंधुओं को जय श्रीमन्नारायण, जय सिया राम।